A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new type of the question which are related to the second chapter of the part A, volume 2, that is an issue of debenture. You know very well in the last few videos we already discussed the board question which are related to the issue of share, forfeiture of the share and reissue of forfeited share. So without creating any delay, let's be discussed which type of the topic are covered under the issue of share. If we are talking about the issue of debentures, when any company issue a debenture for raising a fund, in this situation company paid a regular interest on the amount of the debenture, and the person who purchased the debenture of the company are called debenture holders. एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी कोई डिबेंचर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके रिटर्न में उसको मिलता है इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज अ चार्ज, मींस इट इज एन कंपल्सरी एक्सपेंस whether there is a profit or loss. And you know very well some of the important basic features related to debenture. Debenture will be taken from the borrowed fund, and if we are talking about the source of the fund, so there are basically two sources of fund: owner's fund and borrowed fund. In the owner's fund we are talking about the equity, cash shares, preference shares and the retained earning. As well as if we are talking about the borrowed fund, so debenture is a very popular instrument by which we raise the fund from the third parties. As well as the debenture holder are the creditors of the company, and the very important part of the debenture, it is issued at par, premium as well as at it is discount. Okay, so as well as if you are talking about the redemption of the debenture, so debenture can be redeemed after a certain period and it may be redeemed at par or at premium. If you are talking about the board questions, the nature of the board question which are asked in the issue of debenture in this chapter, so the some of the important topics related to this chapter are as follows, so please note down in your copy properly. The important topics related to issue of debenture. The first topic which are related to the issue of debenture is issue of debenture for cash. You know very well debenture are issued at par, premium as well as at discount. And if we are talking about the redemption of the debenture, so debenture can be redeemed at par or at premium. It cannot be redeemed at discount. So the first topic of this chapter is issue of debenture for cash. Number second topic of this chapter is issue of debenture for consideration other than cash. Is that clear? So second topic is issue of debenture for consideration other than cash. यानी समटाइम्स कंपनी डिबेंचर इशू करती है कैश के अलावा, यानी कैश में डिबेंचर इशू न कर कर किसी एसेट्स को परचेस कर लेती है, किसी मशीनरी को परचेस करती है या कोई लायबिलिटी पे ऑफ कर देती है. The third topic of this chapter is issue of debenture as collateral security. यानी कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. कोलेटरल सिक्योरिटी में इट इज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी. यू नो वेरी वेल, जब किसी कंपनी को लोन चाहिए होता है तो क्या कर सकती है, बैंक से भी लोन ले सकती है. तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है टू द बैंक, टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड टेक द लोन एंड इशू द डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी. इट मींस इन एडिशन टू द प्राइमरी सिक्योरिटी. नंबर 4 is issue of debenture on condition of par, on condition of
redemption. You know very well, if you are talking about the issue of debenture, यानी कभी कभी कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उसके साथ रिडम्पशन के कुछ कंडीशन होते हैं, एंड दीज कंडीशन आर, यू नो वेरी वेल, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार. Number second, issued at par and redemption at premium. There are 5 to 6 cases in this topic, as well as issued at par, issued at premium and redemption at par, issued at premium and redemption at also premium. And next situation is issue at discount and redemption at par, and last will be a issue at discount and redemption at premium. So these are the cases which are related to the कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी हम डिबेंचर को इशू करते हैं और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस लगा देते हैं विच आर रिलेटेड टू द रिडम्पशन. एंड नंबर 5th पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. यू नो वेरी वेल, व्हेन कंपनी इशूड द डिबेंचर, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी पेड अ रेगुलर इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर, एंड यू नो वेरी वेल, बिफोर द paying the interest to the debenture holder, it is a responsibility of the every company to pay the interest on, to pay the tax on the interest income of the debenture holders. As well as in this chapter, some of the other theoretical points related to the debentures, meaning concept of the debenture, types of the debenture, as well as the important differences, that is in differences between share and debenture, will be asked in the examination. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली, एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर विच विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So the first question which asked in the examination in the year 2012, in all over in India examination, Vijay Lakshmi Limited invited application 10,000 12% debenture, 10,000 12% debenture of rupees 100 each at 70 rupees premium. 70 रुपए प्रीमियम पे इशू किए गए. द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 13,500 शेयर. Application were received 13,500 शेयर, 13,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिला. Application for 3,500 debenture were rejected and application money was refunded. Debenture are allotted to the remaining applications. तो इस सिचुएशन में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? सो पहले आपको एप्लीकेशन मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% debenture application and allotment, and the number of share is 10,000. okay, number of shares 10,000. no, कितने बिल एप्लीकेशन मिला? 13,500. so 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपए का शेयर है, 70 रुपए प्रीमियम पे, तो इशू कितने पे होगा? 170 पे. ओके, जब आप ट्रांसफर करोगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, so in this situation first of all we write down the 12% debenture. how many debentures? 10,000. and एक debenture कितने का है? 100 रुपीज का. तो ये हो गया आपका 10 लाख.
एंड द प्रीमियम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज ऑन 10,000 शेयर ऑन 70 rupees, that is in 7 lakh. Okay, and the amount refunded, that is in 3,500 share पे, total 170 rupees will be refunded. टोटल आपने कितना रिफंड कर दिया, 170 rupees. सो आपको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आए उसको लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है. ओके, सो देयर आफ्टर ये आपको फिल कर लेना खुद से, क्योंकि दिस इज एन होमवर्क फॉर यू. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2017 दिल्ली एग्जामिनेशन. ओके, सो इन द ईयर 2017, the question is very clear. X Limited invited application for issuing 1,009% debenture of 100 each at a discount of 6%. यानी 1,009% debenture issue किए गए at the rate of 100 at 6% discount पे. कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 6% डिस्काउंट पे. एंड एप्लीकेशन फॉर 1200 डिबेंचर वर रिसीव्ड. एप्लीकेशन कितने के लिए मिला, 1200 डिबेंचर्स पे. सो प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट. सबको प्रोराटा किया गया और बाकी पैसे रिटर्न कर दिए गए, क्योंकि सारा पैसा आपको एक ही पे मिल गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट में. सो उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% debenture application and allotment. And how many debenture, 1200 debenture पे 100 का शेयर है, 6% डिस्काउंट, तो कितने पे मिला होगा, 94 पे मिला होगा, बिकॉज 100 का 6% is 6. नंबर सेकेंड, 9% डिबेंचर application and allotment debit, and second is 9% debenture. 9% debenture is just the face value of the share, 1,000 into 100, that is in 1 lakh. 9% debenture is 1 lakh. And you know very well 200 शेयर पे तो आपने पैसे को लौटाना है, तो टू बैंक 200 पे कितना रुपए आपको लौटाना है, 94 rupees, क्योंकि सिर्फ आपको 94 मिले. And the remaining value will be taken as a discount on issue of debenture. Is that clear? So discount कितना लिखोगे आप, कितने शेयर पे डिस्काउंट कितना भी है, 1000 शेयर पे कितना रुपए, कितना है, 6% डिस्काउंट है 6, so discount will be 6,000. और आप बैलेंस करके वैल्यू निकाल लेना, यहाँ मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड करके इसमें से डिडक्ट कर लेना, तो ये भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. Because you know very well the board question is very important for you, so please note down this solution in your copy properly and complete the remaining amount and give me the answer with proper WhatsApp, with proper format by WhatsApp. Okay, so next let's move to the next question. The next question will be in the year 2016. It is very famous question. In the year 2016, Delhi 2016, and the question is KTR Limited issued 365 9% debenture. 365 9% debenture of rupees 1,000 each. एक डिबेंचर कितने का है, 1,000 each, on 4th March 2016. Past necessary entry at the time of the issue of debenture in the following situation. And the situations are, situation number 1. Situation number 1 is when debenture are issued at par and redemption at premium of 10%. ओके, डिबेंचर इशू हुआ
पार पे और रिडम्पशन होगा 10% प्रीमियम पे. So in situation, the general entry will be a bank account debit to 9% debenture application and allotment. You can see that debenture are issued part and redemption at premium of 10%. So you know very well, debenture की face value कितनी है? 365 debenture of rupees 100 each, 1000 each. So the actual value of is 3,65,000. Okay, and value भी रिसीव हुई 3,65,000 क्योंकि पार पे इशू है and redemption पे प्रीमियम है. So you know very well the second entry will be a debenture application and allotment. It will be debited through 3,65,000 and the actual value of the debenture is 9% of debenture is 3,65,000 and the premium on redemption of debenture is 10%. किसका 10%? 1000 का 10% is 100 and कितने shares पे? 365 debentures पे. So 36500 and it is a loss. So it will be known as a loss on issue of 9% debenture and the loss is 36,500 which is in 10% of 3,65,000. So this is a solution of the first question. The second will be a second. It is given when debenture were issued at 6% discount and redeemable at 5% premium. The second situation is when debenture are issued at 6% discount and redeemable at 5% premium. So in this situation, debenture issue है 6% discount पे और redemption हो रहा है 5% premium पे. So it is very clear कि पहली entry will be the first entry of the bank account debit, discount on issue of debenture account debit. आप single entry भी कर सकते हो to 9% debenture and it is very easy and redeemable at 5% premium. So premium will be created, premium on redemption of debenture and it will be taken a loss on issue of debenture. और अगर हम अमाउंट की बात करें so अब आप 1 by 1 समझना इस चीज को. डिस्काउंट कितना है? 6%. तो 1000 का 6% is a 60. Premium is 5%, so 1000 का 5% is 50. Premium is also 50 and the face value of the share is 100 and received amount कितने का डिबेंचर इशू किया आपने? 6% डिस्काउंट. So 6% will be minus 1000 का 6% गया तो कितना बचा? 940. So 365 multiplied by 940. Discount on issue of debenture will be as 365 multiplied by 60. Loss on issue of debenture, it will be known as an premium on redemption of debenture. It will be a 365 multiplied by 50 and the face value of the debenture is 365 multiplied by 100, that is in 3,65,000 and the premium on redemption of debenture will be a 5%, that is in 365 multiplied by 50. आप चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो, चाहो तो दो एंट्री में भी इसको डिवाइड कर सकते हो. The two entries will be a bank account debit to 9% debenture application and allotment. कितने से? 940 multiplied by 365 and the second entry will be of this transaction, that is an 9% debenture application and allotment. Amount is 940 multiplied by 365, that is a loss on issue of
डिवेंचर, अब आप खुद देखो टोटल लॉस कितना होगा, इशू पे 6% डिस्काउंट है एंड रिडम्पशन पे 5% क्या है, प्रीमियम है। तो इट इज क्लियरली सेज दैट कि 6 रुपए 60 प्लस 50 टोटल 110 रुपीज का लॉस हो गया ऑन 365 शेयर। आप चाहो तो इन दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, ओके। टू 9% डिवेंचर to premium on redemption of debenture. The premium on debenture, 9% debenture will be 3,65,000 and premium on redemption of debenture will be a 365 debenture of 50 rupees each. तो आप इस क्वेश्चन को सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो, डबल एंट्री में भी कर सकते हो. यू कैन सी दैट द टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, either you will pass the first single entry or you will pass in the two entries. Okay, so please note down the solution in your copy properly. Let's we move to the next question. The next question is related to the issue of debenture for consideration other than cash. You know very well, डिबेंचर को हम कभी कभी इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश के लिए नहीं, कैश के अलावा जैसे बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए इशू करते हैं. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वेरी क्लियर, दैट इज इन द ईयर 2008. ओके, वाई लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 55,000 फ्रॉम जेड लिमिटेड. 10% was paid by Y Limited by accepting a bills of exchange in favor of Z Limited, and the balance was paid by the 9% debenture of 100 each at par, redeemable after 5 years. Pass necessary journal entry in the books of Y Limited. So आपको journal entry पास करनी है, entries in the books of Y Limited. So first of all आप क्या करोगे, the first entry आपने क्या खरीदा वाई लिमिटेड से, वाई लिमिटेड ने क्या कैसे परचेज किया, जेड लिमिटेड से मशीनरी. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड. कितने की मशीनरी थी, दैट इज इन 55,000 की. एंड आफ्टर दैट आपने क्या किया, 10% वॉज पेड बाई द वाई लिमिटेड बाई एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. और वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड को इमीडिएटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल, 10% के. सो 10% इज 5,500 एंड रिमेनिंग वैल्यू विल बी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इशू डिबेंचर. इसका फॉर्मूला आपको बताया, याद होगा, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. So purchase consideration will be कितना, 55,000 में 5,500 ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, तो 49,500. और इशू प्राइस पार पे इशू कर रहे हो, यानी 100 रुपीज का आपको डिवेंचर इशू कर रहे हो. सो हाउ मेनी डिवेंचर विल बी इशूड, 495 डिवेंचर्स. सो द थर्ड एंट्री विल बी जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर. How many debenture? 495 debenture of rupees 100 each. So 49,500 का आपने debenture issue कर दिया in favor of जेड लिमिटेड. Now the next question of the same topic, that is an issue of debenture for consideration other than cash, and this question is asked in the year 2008 in the compartment examination also. And the question is very clear. Sarma Limited brought a business of the Verma Limited on 1st April 2018, consisting of sundry assets of 2,80,000 and creditor of rupees 50,000. तो आपने sundry assets खरीदा, and creditors टेक ओवर किया, और बिजनेस खरीद रहे हो. किसका बिजनेस खरीद रहे हो, परचेज अ वर्मा लिमिटेड का बिजनेस टू वर्मा लिमिटेड. बिकॉज यू नो वेरी वेल, जब कोई कंपनी
किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को परचेस करती है, सो इन दिस सिचुएशन द एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड external liabilities will be created. And the next line is 50,000 was paid in cash immediately, and for the balance 6% debenture issued at a premium of 20% on 5/4/2018 past necessary general entries in the books of Sharma Limited. तो आप ये एंट्री किसमें बुक पास करो? इन दी बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड. तो आपने एसेट्स कितने की परचेस की? शर्मा लिमिटेड ने एसेट्स परचेस की 2,80,000 का एंड क्रेडिटर्स हैं 50,000 का, और यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन इज नॉट गिवन. अगर परचेस कंसिडरेशन इज गिवन सो इसको वर्मा लिमिटेड में लिखते. ऐसा लिखा नहीं है कहीं भी क्वेश्चन में कि कितने में बिजनेस खरीद रहा है. सो द बैलेंस अमाउंट इज 2,30,000 will be taken as a purchase consideration. Now वर्मा लिमिटेड को हमने इमीडिएटली क्या पे कर दिया? वर्मा लिमिटेड को इमीडिएटली हम लोगों ने बैंक से पे कर दिया 50,000. इमीडिएटली कितना पे कर दिया? 50,000 लिखा है. 50,000 immediately paid in cash. Sorry for that, paid in cash. So बैंक को क्रेडिट नहीं कर सकते. एंड नंबर थर्ड, बैलेंस अमाउंट के लिए आपने डिबेंचर इशू किए, वो भी कितने के? 6% डिबेंचर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. ठीक, तो सिंपल सी बात है, आप निकालोगे नंबर ऑफ इशू डिबेंचर 9% डिबेंचर. 9% लेकिन 6% नहीं. फिर से मैं देख लूं, द परसेंटेज ऑफ द डिबेंचर इज 6% डिबेंचर. So the formula is purchase consideration. So you can see that 230 में 50 already आपने पे कर दिया है, and the balance will be a 180. Issue price, face value of the share is, in this question, face value of the share is 100 and the premium is 20% of the premium. So the face value is, issue price is 120. So it will be divided 1,500 debentures. So the next entry will be your वर्मा लिमिटेड डेबिट. वर्मा लिमिटेड को कितना देना था हमें? 180 पे करना था. आफ्टर पेइंग ऑफ 50,000 to 6% डिबेंचर 1,50,000. कैसे 1,50,000 है? 1,500 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का है. एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000, 1,500 शेयर into 20 rupees for the premium. So you can see that how company issued its debenture for consideration other than cash. Okay. And in this situation you can see that first of all we purchase the assets, we purchase as well as the liabilities, and the difference value will be taken as an purchase consideration. Immediately we paid the 50,000 to the Verma Limited, and thereafter we find out the number of issue 6% debenture. 1,80,000 is the consideration. How? 230 minus 50, 180, and the issue price of the share is 120. So the number of debenture issued is 1,500. And the entry will be Verma Limited debit to 6% debenture to security premium reserve. 6% debenture equals to the 100 rupees of the debenture, 1,500 debenture, so 1,50,000. Security premium reserve is 1,500 into 20 equals to the 30,000. So this is a solution of the question which are asked in the year 2008 in the main examination as well as in the compartment examination. So please note down the solution in your copy properly. So I hope today we discussed the different important board question which already asked in the board examination in the year 2008, 2010, 2013, and this question is related to the first two topic of this chapter, that is an issue of debenture for consideration
for consideration other than cash, issue of debenture for cash, as well as issue of debenture on terms of the redemption. So I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding this video, please ask me in the offline classes as well as in the WhatsApp group. And I request to all the students, each and every student, please solve the board papers, previous board papers very carefully. And if you have any doubt, so please ask me, because practice makes a man perfect. So आज के लिए इतना ही. Take care. Thank you. Goodbye.